We have a breaking news coming in after the Plea Supreme Court a petition on Joshimath filed by an Uttarakhand lawyer at the Delhi High Court seeking immediate rehabilitation of the affected people of Joshimath. The petition in the High Court said direct the respondents to constitute a high-powered joint committee in the chairmanship of the retired Justice of High Court and representative all relevant ministries to look into this immediately for the affected areas. The situation on Uttarakhand's Joshimath is only worsening. District Magistrate made a late-night visit to meet the displaced people rehabilitated in the camps. CM Rehabilitation Dhami also made a visit to the sinking town to take stock of the situation. However, locals are not so satisfied by the short visit that the CM made, without promising any action. My colleague Gaurav gets us the report from the locality near Oli, where local residents are voicing their protest against the government as they bear the brunt. सुनील वार्ड में हम हैं और सबसे पहले जो दरकने की घटनाएं हैं, मकान दरकने की, दुकान दरकने की, जमीन दरकने की, सबसे पहले यहीं से शुरू हुई थी और यहां से औली मात्र 5 से 6 किलोमीटर रह जाता है। तमाम महिलाएं गांव की मौजूद हैं और आज मुख्यमंत्री सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, लेकिन शायद चंद मिनटों के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन 5 मिनट के लिए। लेकिन क्या आपके मकान दुकान बच पाएंगे? क्या आप लोग को नहीं लगता सर, हमको तो कुछ लगता ही नहीं कि कुछ बचेगा। हम तो डर के जी रहे आए। जब हम लोगों ने नीचे पे गिरा, हम रोड में लेट गए, तब जाके आए। ऐसा करना पड़ेगा हमको, अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमको रोड में लेटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हैं, उनको तो हमारी आवाज सुननी चाहिए ना, लेकिन नहीं सुन रहे ना। वो वापिस आ रहे थे। जब हमने रोड पे सारी अध्यक्ष की, सब लोगों की गाड़ी खड़ी की, तब जाके वो यहाँ आए। सुबह से हमको यहाँ बैठा रखा उन्होंने, हम यहाँ भूख हड़ताल पे हैं। क्यों? मुख्यमंत्री है, यहाँ हमारी सुनने के लिए तो उनको आना चाहिए था ना। भूख हड़ताल पे? हाँ, सुबह से यहाँ बैठी है महिलाएं, जो कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया है मुख्यमंत्री के। उस एक साल से यहाँ पे बैठ के आए, हम उनको बुलाने गए, वो आए यहाँ पे और उन्होंने हमारी समस्या सुनी है। हमने समाधान क्या निकल रहा है? समाधान उन्होंने ये कहा कि होगा। हम क्या होगा, क्या करेंगे? अब क्या होगा? मकान कैसे बचेंगे आपके? अब क्या होगा? कुछ नहीं बोला उन्होंने। हाँ, थोड़ा मुख्यमंत्री हमारे जो है कि जनता के बीच में जाने के लिए राजी नहीं है। क्यों? आज मुख्यमंत्री आए थे, लंच तो बाद में था, उनका पहले हमारे जनता के बीच आते ना। वो आए भी वो तब जब हम आधा लेडीज यहाँ पे रही, आधा हम कैंप में, हम रोड पे हम लेट गए। तमाम महिलाएं हैं जो अपनी मांगों के लिए धामी से मिलना चाहती थी, लेकिन धामी बहुत कम देर के लिए आए। जब वो महिलाएं उनसे मिलने की मांग के लिए पहुंची, और ये सुनील वार्ड है, मैं आपको दिखा दूं, ऊपर औली का रास्ता है और यहाँ भी तमाम घरों में दरकन हुई है और कैसे यहाँ मकान, दुकान, बाजार, खेत सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर है। Times Network Hari spoke exclusively to the eminent environmentalist and research scientist Ravi Chopra, who was the chairman of the top court's high-power committee on Chardham highway expansion. He points out that glaring lapses which have led to the recent subsidence. The eco-activist reveals that despite recommendations, no one paid any heed and rampant construction continued unabated. Listen in to the exclusive conversation. We had made a very strong recommendation that before any work is begun, there must be very detailed and careful geological, geophysical, and geotechnical analysis of the rocks, because there has been an old recommendation way back in 1976 that the toe of that hill should not be disturbed because the slope is very sensitive. It's old landslide and glacial debris. I've heard from people who are still part of the committee that the blasting work has begun and that the road that is being, the bypass that is being built now will be to the 10-meter width. So when you do blasting on that kind of a sensitive area, it does affect the structure of the rocks and the mountains and so on. After 1976,
when the Mishra committee had proposed that construction in that development in that whole town should be thoughtful and carefully done, since it is a sensitive slope, I don't think anybody bothered ever to carry out any kind of a carrying capacity study of that mountain. Okay, the urbanization that has taken place has been most unplanned, and that should not have been done.